तरह तरह की थियरीज चल रही। जब भी ये सवाल किसी भी स्टार से या फिल्म मेकर से पूछा जाता है कि हिंदी फिल्में उतना अच्छा क्यों नहीं कर रही हैं जितना साउथ इंडियन फिल्में कर रही हैं हाल फिलहाल में, तो सब अलग अलग थियरीज दे रहे हैं कि हम लोग मासी फिल्म बनाना भूल गए हैं। कोई बोल रहा है 70s 80s में जिस तरह फिल्में हमारी बनती हिंदी थी। फिल्म में रूटेड नहीं है। बहुत सिंपल आप सा किस आंसर तरह है। से देखते हैं? बोल रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सा आंसर है। आप जब तमिल फिल्म देखते हो या तेलुगु फिल्म देखते हो या मलयालम फिल्म देखते हो, वो अपने कल्चर में रूटेड है, चाहे वो कल्चर मेन स्ट्रीम हो चाहे नॉन मेन स्ट्रीम हो। हमारी फिल्म में रूटेड ही नहीं है। हमारे यहाँ जो हिंदी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हिंदी फिल्में बना रहे हैं, और हमारी फिल्म में रूटेड नहीं है। जहाँ रूटेड होती है वहाँ चलती है ना, क्यों नहीं चलती है? हमारे मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स जब अपनी फिल्म बनाते हैं तो चलती हैं। हम लोग अपनी फिल्म नहीं बना रहे हैं। गंगूबाई वर्क की ना, भूल भुलैया वर्क की, वो जो दो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने वही फिल्में बनाई जो वो बनाते हैं। हाँ, बाकी फिल्म मेकर्स वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं बनाते। वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जॉनर चेंज कर रहे हैं, अपना कुछ और कर रहे हैं। वो इट्स लाइक हम लोग रूटेड, जब जैसे ही हम रूट होंगे अपने आप फिल्में चलेंगी। सिंपल सी बात है। अनुराग, एक सवाल और है मेरा। किल बिल जो एक कल्ट फिल्म मानी जाती है हॉलीवुड की, मैं उसका रीमेक नहीं बना रहा वो हूँ। रीमेक नहीं है, होमाज है। होमाज पे नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, वो आपको तब पता चलेगा जब मैं बनाऊंगा। सी उसके देखो, बारे में कुछ। एक हाँ। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, आप एक क्लासिक का रीमेक बनाना बेवकूफी होती है। एक फिल्म ऑलरेडी है इतनी बड़ी क्लासिक में, क्यों उसका रीमेक बनाऊंगा? तो अगर आपने मेरी टी शर्ट देखी होगी जो मैंने अनाउंसमेंट की डाली थी, बिल्कुल, देखी उसमें देखी। किल बिल था, खून भरी मांग में था। ठीक है, तो खून भरी मांग जो है किल बिल से पहले बनी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। मैं क्या बना रहा हूँ मैं अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं बना लूंगा आप देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना क्या है। Anurag, थैंक यू। slightly to your left, over here. Hi. Anurag, you've done some wonderful thrillers over the years, but this is the first time we see sci-fi elements also seep into a story. Why such a late interest in science fiction? I'm very scared of it. I'm very scared of science fiction. I'm saying you have on one. See, today the world is one place, right? OTT पे आप सब देखते हो। हमारी ऑडियंस कैसी है आज की डेट में? अगर आप नोलन नहीं हो सकते तो उधर घुसे ही मत, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी देखती है। अगर आप उस लेवल पे नहीं जा सकते तो जाओ ही मत, अपनी फिल्म बनाओ। तो मैं तो एक तो पहले स्पेशल इफेक्ट से बहुत डरता हूँ, साईफाई से डरता हूँ, सबसे डरता हूँ। वो डर जाने में बहुत टाइम लगा मेरा, और वो ऐसा नहीं कि पूरी तरह चला गया है। अभी मैं बोल रहा हूँ, इतना अगर ओवर कॉन्फिडेंट होते तो मैं फिल्म बनाने से पहले बोल देता देखो हर जगह जाएगी। ये तो फिल्म धीरे धीरे लोगों ने देख देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ ये कमाल है। लेकिन मेरे अंदर तो वैसे ही रहता है कि पता नहीं है यू हैव डन जस्टिस और नॉट, बट आई नो वी गिव इट आवर बेस्ट। सो अभी कहाँ जाता है क्या जाता है, रिएक्शंस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। Ekta, Anurag sir. I'll just ask Ekta something. Ekta, it's quite heartening what you said that about releasing the Baaraa in theaters, and you would also have Divakar's film LSD 2 that was announced, and it's a nice throwback to a time when OTT had not come, and we would see these films and the first LSD and Anurag's films in theaters. Would cult be pushing in that direction and bringing these sort of indie films into theaters again? So I'm hoping. I definitely want to release LSD 2 and now Dobara as a beginning film. Eventually, it's going to be the response that will decide because we can't take too much of a risk. We've taken a calculated risk here. LSD 2 is like love in the times of camera was LSD 1. Love in the times of internet is LSD 2. So it's quite interesting to see how Debankar has now chosen the social politics in the time of internet in LSD 2. So with these maverick makers, if I am going to be spending their time to make a film for cult, my job is to give it the best push I can give it. Till the last leg, I will try to get it into the theaters. Because I have seen at a time when LSD released, it might have not done well everywhere. But in Bombay on Sunday, you could not get tickets. And it was a film with no cast. You could not get tickets. People were calling me up. I was like, and that feeling, no amount of appreciation on OTT can give you. And I think I'm a euphoria junkie. I want that euphoria of a movie releasing in a theater because that's what we all come for. I mean, it is the magic of a cinema that you see a movie in. And this is the perfect date movie. Young people will go. We don't have great thrillers in the theater. And let's do that.
Anurag sir. Hi, this is Disha here from News 18. Here. Hi. Yeah. Center. Hello. So I wanted to know from the trailer, I got shades of Stranger Things and Dark. Good. Wow. Yeah. So was this just coincidence or is there some kind of inspiration there? No, it's not like that. I have a. If you look at the red raincoat, it's a creation of Prashant Sawant, who's my costume person, who puts in a lot of thought behind everything. So you have to ask this question to him. I can give you his number. But trust me, when you see the film, and I felt that yeah. first scene where the kid is on the bicycle, it hits you like Stranger Things. The film is nothing like Stranger Things, but is at not that like- moment, you feel finally we have this sci-fi thriller that I thought on my own that oh wow. So there's nothing like Stranger Things, but you will get that little bit, that tingy feeling when you It's see in the Stranger Things. zone of It's a euphoric euphoric and feeling you get when Stranger you Things and get everything. to see Yeah. a sci-fi great narrative that definitely happens. The film is actually very emotional. Interestingly, you'll know what when the movie unfolds, how it has such great because sci-fi is a world unexplored. So you will always find references with things that resonate. Hi, sir. Anurag, sir. Sanchita from Instant Bollywood again. Over here. Left, San- right. Yeah, okay. So I wanted to ask you, what is the significance of the title? Why Dobara? Because even in the teaser, I you think it's a were... very smart title. Very It's a Anurag's very title, smart very title. smart. And I think it serves a purpose. It's a very smart title. And the credit for it also. The Dobara, sorry, so मेरे पास mic है. So Dobara is a time which is very significant in the film. It's something that happens again, a repetition, and it's about second chances. So on every It's level, everything. The film, it is the perfect title for a film. And the credit of it must go to the writer, Nihit Bhave, who came up with the title, who also adapted the film. It's amazing. Anurag, Justin here towards your right here. Hi. Hi. Right, Justin. Hi, Ekta. Hi, Anurag. Hi. The discussion today, of course, is that only well-mounted spectacle films, especially from the South, will work at the box office. Every other film, especially mid-sized films, will struggle. Anurag, your career has been a testimony of small films going big. Are the current times scary to you as a filmmaker? And does this really signal the end of what once was called the multiplex film era? That is a question you must ask the other filmmakers. For me, times have always been scary. Forever. Throughout my career. And the idea is to go out and risk it. So, yes, for me, the risk factor is same here as it was for every other film. It's a really tough time for people who have established and understood the market and make very big films. For me, it's the same. Hi, Ekta, this is Priyanka. Hi. So I wanted to ask, I'm just following up from what Justin asked. This is, of course, the times that we are. People are, of course, feeling that it's very unpredictable to kind of gauge what the box office will say, how the audience will reject or accept films. But as a producer, do you feel this is just a phase or the beginning of perhaps something permanent that would change how Indian cinema will go forward? And just the second part of it is also what the concern is that maybe the films with a lot of female stars might struggle. And why I ask this is because the films that are doing very well are led by, are mostly male-centric action spectacles. And we've done a lot of progress in Hindi films where, women-led films or female stars in the center, perhaps doing the kind of films that they were, telling the stories that were risky and brave, were getting that acceptance from masses. Do you think we might undo that progress? Because in a lot of action films, female stars are just kind of relegated to maybe object of desire. How do you see that? I think Gangubai just came and answered your question. So there's nothing like an actor who's male or female. It's a popular actor or not a popular actor. There are a lot of male actors who are not doing well also. So we should really give this a commerce bent instead of a gender bent. The first part of your question is, today a film has given up euphoria for longevity. So there's a pre-sale,
its de-risk, its longevity is increased because if you don't catch it in the theaters, you're going to see it on a digital platform. But what you have given up for it is euphoria, the magic of cinema. So unless the film is really large, people are not paying because they believe that they can see it later on a platform, which is great for a maker because sometimes films that don't get patronage in the theaters land up being watched and then appreciated later. So the longevity helps a lot for if your film is good. But films which are the multiplex films, yes, suffer because they usually people choose to watch a digital route later. It doesn't mean they don't want to watch the film, but there's no urgency because they don't promise a theatrical experience. The reason we chose Dobara to come in the theaters is because when you go with your friends on a Sunday evening to watch a movie, not everything for young India or young urban, young mass India is going to be about seeing large scale dhoom dharam fights. Sometimes you want to go and catch a film that you can talk about at dinner later and have conversations about, especially because it's superb cinema. We're hoping that the movie gets that kind of patronage because if I'm wanting to go to the theater on a Sunday, I mean, I saw Elvis on so many weeks because I was like, there's a lot of audience. Top Gun. There are films that people will watch if the film is good, and that will add to the euphoria when you come to watch it on an OTT platform. And we're hoping to convert that audience that wants to see a film in the theater. So, like I said, there are good and bad to every what should I say invention, and the OTT invasion has the greatest advantage for small films because their longevity has increased. If you missed it for 2 weeks, it doesn't mean the film has become, oh, satellite won't buy it because it's not a mass, it's not a family film, you know. And also, in the sense you can't, we are not, nobody's a Nostradamus. We are not soothsayers. We don't know. In the sense we are also watching. The thing is, but you have to take a chance. If like, it's like you saying that, bachpan mein, when I came to Bombay, I needed a guarantee that I will become a filmmaker and I will make a film. You can't. You risk your life, right? You come out and you're like, I want to do this, and you do it, and then let it tell you, no. Like life may, if you don't take that little bit of risk, na, you'll Never, not yeah. be, you'll give up on euphoria, which is what makes us run, you know. And it doesn't matter where people will watch films. I'll continue making films. तुम्हारी choice है कहाँ देखना है देखो. अनुराग जी मेरे दो Alright, सवाल before we wrap up, we'll just take two Anurag last ji- questions. मेरे दो सवाल है अनुराग जी एक आता हूँ मैं एक आपके सवाल- पास एक आता हूँ सवाल सर. ये। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ आपसे आपके दो पास. सवाल है। एक तो फिल्म जो थिएटर में भी रिलीज होगी साथ में ओटीटी पर भी जाएगी, तो दोनों अलग अलग वर्जन होंगे क्या? नहीं नहीं, एक ही वर्जन होगा, बाद में महीने जाएगी. बाद आएगी. वो बाद में आएगी. OTT पे काफी बाद में आएगी. ओके, लेकिन अगर आपकी फिल्म जब ओटीटी पे जाती है, आपकी फिल्में मतलब टाइम के बहुत ही अहेड रहती है, तो वो आप विदाउट सेंसर ही डालेंगे कि विद सेंसर? नहीं, एक ही वर्जन है. हमारी फिल्म ऑलरेडी UA सर्टिफिकेट है. हमारी फिल्म ऑलरेडी सेंसर से क्लियर्ड है. We already have a UA certificate. It's cleared by the censor. Same version will go everywhere. Same version is playing at the festivals also. कोई अलग वर्जन नहीं है. ओके, निर्माता है अगर तो उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. सुनीर जी, मिस्टर क्षेत्रपाल, तो आप ही बता दीजिए, लाइक व्हेनेवर द फिल्म इज गेटिंग रिलीज इन अ इंटरनेशनल अरीना, मे बी इन अ फिल्म फेस्टिवल और सो, तो ऐसे होता है कि यहाँ इंडियन मार्केट जो थोड़ा सा उसमें थिएटर तक जाने के लिए कंजूसी करता है, मतलब नहीं जाते हैं लोग देखने के लिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं, हमारी फिल्म जा रही है हर जगह, लोग देख रहे हैं. हम लोग की फिल्म जा रही है और लोग देख रहे हैं. नहीं, रिलीज के बाद की बात कर रही हूँ. रिलीज के बाद भी देखेंगे. वो तो रिलीज के बाद का होना, मैं नहीं, मुझे ये नहीं मालूम कल क्या होने वाला है. What she's asking is your film a festival film? So that is it a नो boring नो, film? इट्स ए जॉनर फिल्म. देखो क्या ना, जॉनर फिल्म फेस्टिवल जो होता है वो एक अलग फेस्टिवल होता है. आप फैंटेसिया या इनसे के बारे में, वहाँ सिर्फ थ्रिलर्स और हॉरर्स दिखाते हैं. वहाँ वो फिल्में दिखाते हैं जिसके लिए ऑडियंस जाती है. वहाँ पे आर्ट हाउस फिल्म्स नहीं दिखाते. तो ये फिल्म जॉनर फेस्टिवल्स में जा रही है और ये जॉनर फेस्टिवल्स में हर जगह प्ले कर रही है, विच फॉर अस इज वेरी हार्टनिंग बिकॉज इट मीन्स दैट इट इज रीचिंग आउट टू दैट, ये वो वाली ऑडियंस जो सिटी बजाती है, तो वो जॉनर फेस्टिवल होता है. अनुराग जी सर यहाँ पे सर तापसी जी की बात की जाए तो 2019 में उन्होंने आपके साथ मन मर्जिया की थी, तो वो
काफ़ी 18 में। हाँ 2018 में, तो जो है काफ़ी हिट हुई थी फिल्म और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि तापसी जी की कोई भी फिल्म चल नहीं रही है, तो हम क्या सोचे कि आपके साथ ही उनकी हिट फिल्में होंगी। नहीं नहीं, ये सब आप कैसे बात, मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ ये सब। हाँ, आई थिंक आप इस तरह से फिल्म बना ही नहीं सकते। मैं तो फिल्में नए लोगों के साथ बनाता हूँ। अगर वो हिट वाले चक्कर में बनाता तो मैं स्टार्स का वेट करता रहता ना। मैं तो फिल्में उनके साथ बनाता हूँ जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो चांस लेते हैं, जो मुझे ट्रस्ट करते हैं और जो मेरे साथ जो है हाथ पकड़ के चलते हैं। मैं उनके साथ फिल्में बनाता हूँ। मेरी किसी फिल्म में आप देखोगे तो आपको वो लगातार वही दिखेगा। आई थिंक तापसी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड एक्टर, एंड शी टेक्स हर चांसेस एंड शी गोज आउट एंड शी ऑल्सो पुशेस अदर पीपल। चलना ना चलना तो किसी की फिल्म नहीं चल रही, और जिसकी चलनी है उसकी चल रही है, तो वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है। आजकल तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लॉकडाउन में तो सब रुका था। जी सर, one अनुराग, last question from there. Yeah. अनुराग, ये सवाल आपसे है। मैं यहाँ हूँ। बजट आपके लिए कभी कंस्ट्रेंट रहा है या इस फिल्म में खास तौर पे रहा है? हमेशा फिल्म मैं ऐसे ही सोच के बनाता हूँ, बैकवर्ड्स काम करता हूँ। मैं हर फिल्म में बजट के अंदर रहता हूँ। बजट मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। और जो हमारे जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म पे स्क्रिप्ट पे बैठते हैं और बजट डिसाइड करते हैं। आई ऑलवेज वर्क बैकवर्ड्स सो दैट नोबडी लूजेस मनी। एक एक्सपीरियंस काफ़ी था, उस फिल्म में मैंने इतना लॉस ले लिया कि अगले 10 फिल्मों के लिए मैं हो चुका है। बिल्कुल आखिरी सवाल ये कि आपने तापसी के अलावा जो कास्ट चुनी है, कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और खास करके नासर के कास्टिंग के बारे में, क्योंकि साउथ के बहुत बड़े विलन हैं। बिकॉज वो फिल्म के लिए बहुत करेक्ट है, एंड हम लोग बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। वो सेट पे जिस दिन आए थे तो हम लोग तो पागल हो गए थे देख के। पहली बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। शाश्वता हैं इस फिल्म में, जो कहानी में थे, उनके भी फैन रहा हूँ मैं, तो उनके साथ भी पहली बार काम करने का मौका मिला। उसके अलावा जो है पावेल है और राहुल भट्ट है। बाकी लोग जो हैं आप पहचानोगे उनको देखोगे तो, पर दीज आर आवर मेन कैरेक्टर्स। एंड एक लड़का है आर्यन सावंत। सो ये हमारे की कैरेक्टर्स है फिल्म के, और सभी माहिर मंझे हुए कलाकार हैं। शुक्रिया। हाय Thank एक you लास्ट so much, सवाल। ladies and gentlemen. अच्छा, आप डिसाइड करेंगे हैं? करिए। एकता मैम और अनुराग सर, आप दोनों से सवाल है। आपकी फिल्म में कंटेंट ड्रिवन होती ही है, लेकिन साथ ही साथ बोल्डनेस भी ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि आपकी फिल्म में जब भी CBFC के टेबल पर जाती है तो काफ़ी काट छाट होती है। किसने कहा पहले आपको? एक्सपीरियंस भी हो चुका है सर, बहुत सारे आपने प्रेस मेरी फिल्म कभी नहीं कटी है, सिवाय मेरी सबसे ज्यादा सेंसर्ड फिल्म मालूम है कौन सी थी? बॉम्बे वेलवेट। और मालूम है क्यों? क्योंकि पहला जी वहां बैठे थे। मेरी ना वासेपुर कटी है, ना अगली कटी है। आपको किसने कह दिया मेरी फिल्म कटती है? तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है। हमने तो उड़ता पंजाब भी नहीं कटनी थी। जी, तो इक्वेशन बनाने के लिए अभी ये जो फिल्म है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कितने कॉन्फिडेंट है इस ये बात पर? यूए है फिल्म, मेरी यूए फिल्म देखी कभी? भाई सेंसर से निकल भी आई। सेंसर से निकल गई है फिल्म, और मैंने जिंदगी में बहुत कम फिल्में जिसमें यू आता है, यू वर्ड आता है। मेरी हर फिल्म ए होती है, ये यू ए है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। I want a lot of young people to see the film, even kids. You know, it's a very, very interesting film. It's a film for you. Okay. Thank you so much, ladies and gentlemen. 19th August is when this movie releases in a theater. Thank you, near everyone. Thank Please you, go everyone. watch. Thank you so much. Thank you, sir. Thank Photo you. op. Guys, Right, did you we'll guys do it. like the trailer? ए, दिल से बोलो। Thank you. And we tried our best, जैसा कि हम सभी जानते हैं, we tried our best to connect with Taapsee, but unfortunately, due to some network issues, we could not, get her on board. But कोई नहीं, अगली बार हो जाएगी मुलाकात, अभी तो चालू है. Thank you so much.
Thank you so much, ladies and gentlemen, for being wonderful.